Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me, LearnWithHasnain, your English language instructor and the director of Agency 92 and PIN 92. Today, once again, with all of you people on this special occasion, my first ever live and my first ever work that I'm doing from my office, which is I'm going to start an initiative today. I was actually planning to have a physical and online version of the session that I was going to have today, but unfortunately, because of the heavy rain, none of the participants joined us, so I planned on only having the online. So without further ado, welcome me once more, and we are going to be starting away. By the way, in today's session, I'm also going to be answering your question. I'm also going to be describing what's happening and what's not happening. And I'm also going to be describing about my future courses that I'm going to be giving to you people in the future and going to be providing in the future. So without further ado, let's begin. First of all, let me tell you people a little bit about my current situation and a current state. Lots of people don't know, but mostly do, which is that I am currently the director of Agency and PIN 92. Now, what does Agency and PIN 92 offer? Now, Agency and PIN 92 are, one of them is a real estate agency, one of them is a digital marketing creative agency that works on digital marketing, social media handling, and much more. And I'm a director there, working as honorary director and also working as pretty much all-rounder here. So we were planning to create a course in our own company, which was that I was going to plan a course online and offline, which is going to be about English language communication course and English language communication skills course that was going to have communication skills, confidence building, boosting, having more time management, and a lot of different things that I was going to discuss in that short period of time with you people. So I'm going to be having the same benefits, the same effects, but I'm going to be changing things a little bit for you people, for the sake of you people specifically. So without further ado, let's begin. First of all, today we are going to be talking about what am I going to be giving you people in my future course. This is more of a briefing day, and this is more of a day that I'm also talking, I'm also answering questions, and I'm also briefing you people about the future courses I'm going to be offering. So first of all, why is English language very important? Lots of people don't understand the gravity of English language because of how similar or how much it is available every day to you by different universities, academies, courses, and via multiple different places. But if being honest, English language is quite necessary nowadays, and having a good skill over English language is very necessary. And in a future that is always about English language, I believe it's one of the most important languages. It's not only a global language, it's not only just a common language, but it's rather a language that is universal. A language that in the whole universe is used and in the whole universe is spoke. Of course, if there are no aliens, but other than that, English language is a big language that is used digitally in internet and media, etc. It's used there. It's used in our tests, from our daily life to our jobs to everywhere. English language is used, and that's why I believe English language is very important. Now, for me, what's the difference? Normally, there are many universities, academies that is going to be teaching you English language, but what's the difference between me and them? Now, being a person that has spent a lot of money, that has spent a lot of time and a part of my life in studying and in getting different courses that are internationally viable and internationally wearable. So for that reason, I believe it is one of a briefing that I have, the benefit that you guys can have from me. I am a CELTA and Delta certified English language instructor. Now, what is CELTA? Certificate in English language teaching to adults. Now, what is Delta? Diploma in English language teaching to amateurs. Now, in these cases, these two courses enable me to teach English language to children, to teach English language to adults, to teach English language to multiple different age groups and people from multiple different places. Now, that is something that has a benefit. I'm internationally able to speak my own language, and I'm internationally able to speak my own English language and teach English language to anybody. That's why I am verified, and if you're learning from me, there is a backing point that I am your teacher. So that's the difference. Secondly, I have good communication skills. I have studied communication skills for a lot of time. I've seen many students that know how to write English,
read English and even listen English, but they don't know how to speak English. I've seen adults, lawyers, bureaucrats and diplomats. I've seen them, but they don't know how to actually fluently speak English language, which is one of the biggest problems in our today's era. And that is what I'm going to be teaching. Now, what is something that's very important in English language? Now, in my course, there is going to be a whole syllabus that I'm going to be describing to you people in the future. But the thing is that in my course, there is going to be multiple different factors. There is going to be speaking, there is going to be writing, there is going to be reading, and there is going to be speaking, the most important thing that is there. Now, there are subcategories in it. Grammar. We are going to have grammar, a lot of grammar, because grammar is one of the most important things that is there. And other than grammar, we are going to have multiple different other things, such as speaking, such as speeches, such as many other things that will help you people in your future. I would just need a minute with me. We are going to have a daily discussion that is going to be inquiring of the day-to-day news. There is going to be inquiring of multiple different things that is going to be covered in our daily topics, in our daily discussions, that will be ranging from multiple different things. We're going to daily talk about something that's going to be interesting, different, and something that's very interesting and very magnificent. Not the common day-to-day news that this politician did, this, that politician. We're going to have some interesting things that we are going to be doing together. Now, there is going to be language. Not only is grammar important, but the language side of, for example, language is very important. Literature is important, but language, I believe, is more important, because literature is a writing and more of a feeling that you're conveying from the poet to the reader, but rather English language is something that's used daily. So I believe language improvement is better, and grammar is also a part of both English language and English literature. Now, how will that help you people? That's now a different story. Now, secondly, after English language, we are going to have reading and writing. Now, what will reading and writing comprise of? We are going to have stories and different other things that we are going to do in that. Now, that is something that I believe is very important. Lots of people don't look at reading and writing very importantly, even though they are some of the most important parts of a language. So, I believe that I would be able to cover that part up also for you people. And other than that, what is communication skills now? I'm also going to be talking about that. Communication skills in a simple language is simply how to talk. The way you talk, the way you convey, the way you make people understand you, and obviously the many different parts of a language is communication skills. Now, having a grasp on your viewers, having a grasp on your viewers' attention and making them listen you. आप व्यूअर्स की अटेंशन ले रहे हैं, आप व्यूअर्स को पकड़ रहे हैं और आप उनको सुना रहे हैं और वो सुनना चाहते हैं. That is simply known as, in a simple language, communication skills. आपको तरीका आना चाहिए that how to speak, where to speak, when to speak, what to speak and why should we speak. क्योंकि हर जगह पर बोलना नहीं होता, हर जगह पर हर चीज़ नहीं बोलनी होती, कुछ चीज़ें बोलनी होती है. एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू बी टीचिंग इन माय कोर्स. मेरे कोर्स के अंदर मैं सिर्फ बच्चों को ये नहीं सिखा रहा कि इंग्लिश कैसे बोलोगे, मैं ये सिखा रहा हूँ कि इंग्लिश के अलावा बोलोगे क्या. क्योंकि बोलने के लिए भी यू हैव टू हैव नॉलेज. आई एम गोइंग टू गिव देम नॉलेज, आई एम गोइंग टू गिव देम इंफॉर्मेशन, आई एम गोइंग टू टीच देम व्हाट दे आर ट्राइंग एंड व्हाट दे आर सपोज्ड टू लर्न in their past or in their future. In many cases, teachers only work on fundamentals of English, but I will change the person's life, making them a more creative, a more productive person in their life. I'm going to make them more efficient. I'm going to make them more productive. I'm going to make them more durable. I'm going to make them more persistent and constant with their tasks and make them less procrastinated and lazy. I will change them. I'll teach them life lessons. I'll teach them from my experiences. I'll teach them about the things that I learned in so much time. I'll teach them about the different manners and the different things that we are never told about. You're never told about most of the things that I teach. I'll give the child knowledge. I'll give the child learning that he learns, and which is not available here and there every day. And that's what's special about my classes.
With us, we are going to have multiple different students from multiple different age groups, from multiple different backgrounds. And that's the best part. When you have multiple different students, they have their own little stories to share, they have their own little perceptions to share, and I'm going to make those students speak. And by practice, they'll be perfect in their speaking language. I'll improve their accent, I'll improve their pronunciation, I'll improve their knowledge, I'll improve most of the things. And that's why I believe communication skills is important. Now, how to improve communication skills, I've had a lot of videos on this, by the way. Communication skills are not only about speaking, also your gestures, like the way you speak, the way you move your body, the way you show emotions, the way you do everything. Your face is also showing your communication skills. You need to have a strong eye contact, you need to have a strong speaking skill, you need to be good at that. Now secondly, you have to have a good body language. Like for example, currently I am using my hands in many different ways. Like I'm using my hand on sides, I'm using my hand in front of me, I'm using my hand broadly and closely. It depends on how you use your body language, that matters. Now in simple terms, if you use your hand like this, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu alaikum, this is me, MasterClass, your English language instructor. Not gonna work. But if you say Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu alaikum, this is me, MasterClass, your English language instructor, once again with all of you people. This has more influence. You see, I'm walking with it, I'm showing expressions, my voice is filled with emotions, and I'm also using my hands, my body language, and that's what communication is about. Improving is not the best part. It's learning that is the best part. You improve time to time. That's just coming in your nature. You're like programming. I'm programming you to be better at what you're doing. But it's not always that easy. I'll teach you how to become the best. But it's going to be the fun part that's there. I'll teach you and slowly you'll see the results yourself. Now, how to improve it? Number one, practice makes a man perfect. I'm going to make you people practice and practice a lot of it. I'm going to give you techniques like shadow reading. I'm going to give you techniques like mirror speaking. I'm going to give you multiple different types of reading styles, speaking styles, and multiple different other ways that will help you in your future of doing whatever you want to do. In simple language, that will be what matters, and that will be what helps in your day-to-day life and in your English language communication skills. Now, secondly, after that, how to be better at communication skills is also very much directed to reading. जितना आप ज़्यादा रीड करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा आप बोलेंगे और रीडिंग ज़्यादा मायने रखती है स्पीकिंग से, इन माय परसेप्शन. क्योंकि देखिए, जब आप बोल रहे होते हैं तो बोलने के लिए भी कुछ इम्पोर्टेंट होता है. बोलने के लिए भी आपको कुछ बोलना आना चाहिए. When you need to speak something, you need to have knowledge for that. Speaking is directly connected to knowledge. Speaking is connected to or equal to reading. Now, how is that? Because both of them equal to knowledge. Both of them equal to knowledge. Both of them help you with your knowledge. Now, there is a big difference between them. One is the expulsion, or one is the portraying. You portray your language, you show your language skills. You show your knowledge in one. But in one you gather. In one you are gathering your knowledge, which is something that matters a lot. The way you gather your knowledge, the way you have knowledge is what matters, because simply when you're speaking any language, it's not always about having the language that you're showing. हम लोग क्यों बोलना पसंद करते हैं? क्योंकि हम दिखा रहे होते हैं, और as humans, as social monkeys, हमें अच्छा लगता है कि जब हम और monkeys को कहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, in simple language. But other than that, that's just a joke on the people that believe in the theory that humans evolved from monkeys. But in reality, अशरफुल मखलूकात होने के नाते
बाकी इंसानों को, हमें हमारी ये ग्रीड होता है, एक हमारे सेटिस्फैक्शन होती है when we show others that how much better we are at anything in simple language that helps. So for that reason, I believe it's quite important that we have good communication skills. It's not always about showing. आप दिखा तो रही हैं कि आप रीड कर रहे हैं, आपके पास knowledge है, but it's about the reading too, that you gather the knowledge, then you are able to portray your knowledge, otherwise you won't be able to portray your knowledge. Those were just a few tricks. मेरी क्लास के अंदर मैं बहुत सारी ट्रिक्स, बहुत सारी टिप्स और बहुत सारे तरीके सिखाऊंगा of how to become the best at what you're doing in every way possible, from your communication skills to from your daily life to multiple different other parts that is related to English language. Now let me go through with the different part of one language, which is my syllabus. Now lots of students had the question, syllabus के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? So without further ado, let's start on our syllabus. First of all, syllabus के अंदर हमारे साथ first of all हमारे पास होगा grammar. Grammar के अंदर हमारे पास होगा adjectives, हमारे पास होंगे adverbs, हमारे पास होंगे adverb और उसकी types, हमारे पास clause होंगे, conditionals होंगे, हमारे पास conjunctions होंगे, हमारे पास conjunction और उसकी types, direct indirect, हमारे पास gerund होगा, extra grammar के lessons होंगे हमारे पास. We'll have infinitive, interjections, articles, noun, object, phrase, preposition, noun, pronoun and its types, pronunciation, reported speech, sentences, silent letters, subject and predicate, tenses, types of questions, verbs and voices. अभी ये सारे मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक्स होंगे हमारे पास, जिनके अंदर हम लोग ग्रामर के अंदर डिस्कशन करेंगे और हमारे पास ऑन ईच टॉपिक there are going to be 24 to 20 pages or 24 to 20 slides on every single topic that we are going to be discussing. आज चूँकि हमारे पास physical classes नहीं थी, मैंने सोचा that I do not need to show, otherwise we are going to have a monitor with us, a big screen or a projector that we are going to be showing through, and we are going to have slides. हम लोग उससे आप लोगों को ये सिखा रहे होंगे, and we are going to be teaching you the different topics जिसके मैंने बनाए हैं खुद अपनी मेहनत से. बाय द वे बहुत सारे टॉपिक्स थे, सो बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पर मैंने खुद बैठा और मैंने किया. नाउ इन लैंग्वेज हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं लैंग्वेज के अंदर. लैंग्वेज के अंदर हम लोग सिंपली करेंगे, विल गोना हैव क्रिएटिव राइटिंग. हमारे पास जो स्लाइड्स हैं उसके अंदर हमारे पास क्रिएटिव राइटिंग, CSS एंड PMS इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हाउ टू नो द इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ CSS एंड PMS. फिर हमारे पास नॉर्मल लैंग्वेज की एक क्लास होगी, दैट व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ इट एंड व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सर्टेन लैंग्वेज. हमारे पास फिर डेली डिस्कशंस होंगी. बाय द वे लैंग्वेज भी हम इंक्लूड करेंगे, ग्रामर भी हर दिन होगा, लैंग्वेज भी हर दिन होगा. हम लोग साथ ही साथ डेली डिस्कशन करेंगे. एवरी डे हमारे पास मुख्तलिफ होगा. फॉर एग्जाम्पल मंडे को हम लोग मॉर्निंग के वक्त वी आर गोना हैव मॉर्निंग मिनट्स डिस्कशन, जो कि हम लोग मॉर्निंग के वक्त वी आर गोना हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्कशन दैट वी आर डूइंग एंड वी आर गोइंग टू बी स्पीकिंग दैट, व्हिच इज़ आई बिलीव रियली ग्रेट. हम लोग हर दिन बात करेंगे, वट एवर डे आवर क्लासेस आर, हम लोग बात करेंगे कि आज ये हुआ न्यूज़ में, आज वो हुआ न्यूज़ में, आज ये सब कुछ हो रहा है, और व्हाट आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, और व्हाट इज़ द फ्यूचर दैट इज़ हैपनिंग इन न्यूज़. हमारे साथ ही साथ डिबेट्स होंगे मुख्तलिफ टॉपिक्स पर. हमारे पास 2 टीम्स होंगी, हमारे पास 2 क्लास की साइड्स होंगी, और जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, इट डजंट मैटर कि 2 स्टूडेंट्स हैं या 20 स्टूडेंट्स हैं, वी आर गोना मेक द टीम्स, और फिर वो डिस्कस करेंगे दैट व्हाट पॉइंट इज़ बेटर. फॉर एग्जांपल ट्रांसेंडेंटलिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म. अब ये 2 बहुत ज़्यादा सिमिलर पर बहुत ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक्स हैं, और इन दोनों का एक दूसरे से क्या कनेक्शन है और क्या जो डिफरेंसेस हैं, इसके ऊपर हम लोग डिबेट कर सकते हैं. दैट one team is supporting transcendentalism and one team is supporting existentialism. हमारे पास प्रेजेंटेशंस होंगी, मुख्तलिफ प्रेजेंटेशंस, जिनके अंदर हम आपको ये सिखाएंगे. और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं खुद प्रेजेंट करूँगा आपको सिखाने के लिए अबाउट द बेसिक नॉलेज और अबाउट द बेसिक टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग. फिर कल आप लोगों ने उसको प्रिपेयर करना है. यू गॉट टू ब्रिंग दैट प्रेजेंटेशन, यू गॉट टू डू इट इन फ्रंट ऑफ द क्लास.
डजेंट मैटर कि आप मॉनिटर को यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बट इट्स जस्ट दैट यू आर शोइंग इट ईदर इन जस्ट स्पीकिंग और ईदर इन जस्ट using PDF slides. It's your own personal perception. You're using PowerPoint, etc. आप presentations करेंगे and it's important to speak, not that you're reading. Reading नहीं करेंगे हम लोग क्लास के अंदर. मेरा मतलब है कि जब आप यहाँ पर आते हैं और अपने साथ बुक लेकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं today my topic is about that, ऐसे मैं नहीं मानूंगा. So in my course we are going to be teaching you कि कैसे हम लोग इस तरह पढ़ने से हम लोग किताब को रखेंगे. हमारे पास 3 मेन या 4 मेन बुलेट पॉइंट्स होंगे. बुलेट पॉइंट्स को, एक पॉइंट को देखा, आप उस पॉइंट के ऊपर बोलना शुरू हो गए. हम लोग वो सिखाएंगे आपको. Now in that case scenario we are going to have a lot of multiple other things like speeches. अब बहुत से बच्चों को ये नहीं पता कि स्पीच और प्रेजेंटेशन का डिफरेंस क्या होता है. जिस तरह फॉर एग्जांपल डिस्कशन होती है, तो डिस्कशन में और स्पीच में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है. डिस्कशन और प्रेजेंटेशन में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है. स्पीच का तरीका मुख्तलिफ है. मेरी वन ऑफ माई मोस्ट पॉपुलर वीडियोस अगर आप लोगों ने देखा हो, जब मैं बहुत ज़्यादा छोटा था, खैर छोटा तो अभी भी हूँ, पर जब मैं व्हेन आई वाज अ बिट यंगर, जब मैं स्टूडेंट था इंग्लिश लैंग्वेज का, उन दिनों की बात है, दैट आई यूज्ड टू, मेरी एक स्पीच थी अबाउट मॉडर्नाइजेशन. We had a speech about modernization and that was a speech, क्योंकि बहुत सारे लोग थे और बहुत सारे लोगों के सामने मैंने बात की, तो वो थी एक स्पीच अबाउट मॉडर्नाइजेशन. अब वो स्पीच थी, बट अभी अगर मैं अपने क्लासरूम के अंदर बैठा हूँ और अपनी क्लासरूम में मेरे पास एक बड़ा बोर्ड है, उसके ऊपर मैं कुछ बता रहा हूँ, वो एक प्रेजेंटेशन है, स्पीच नहीं है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपके ऊपर झाड़ नहीं रहा सिंपल अल्फाज में. स्पीच इज मोर ऑफ अ लेक्चर. A lecture is one way, speech is one way, while presentation is two way. Presentation के आखिर में आप questions लेते हैं, बच्चों को समझाते हैं मुख्तलिफ अल्फाज में, and that is the difference between debates, speeches and presentation. अब हम लोग राइटिंग और रीडिंग के अंदर क्या करेंगे? सबसे पहले हमारे पास होगा रीडिंग के अंदर we are going to have stories. अब स्टोरीज के अंदर हम कौन सी किस्म की स्टोरीज? अब हम लोग वो बच्चों वाली स्टोरीज नहीं, we are going to read professional stories about the multiple different other things. So that is one point of that. We are going to have blogs in it. मेरे अपने खुद जो blogs मैंने खुद लिखे हैं वो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा. मैं आपको मुख्तलिफ और लोग होंगे हमारे पास, उन सब के blogs पढ़ाऊँगा और वो सारी चीज़ें आपको समझाऊँगा. उसके बाद फिर हमारे पास न्यूज़पेपर होगा. न्यूज़पेपर हम लोग डेली का रीड करेंगे. जिन बच्चों को फॉर एग्जांपल, बच्चे तो नहीं, बहुत सारे लोग होंगे जो कि यूजुअली मुझसे बड़े होंगे. सो जो हमारे पास न्यूज़पेपर होगा उससे हम लोग डेली की नॉलेज लेंगे, दैट क्या हुआ आज मॉर्निंग के अंदर, वीकली और मंथली क्या क्या हुआ है और क्या क्या नहीं हुआ. एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू हैव आर्टिकल्स इन इट. नॉट द ग्रामर वाले आर्टिकल्स नहीं, इज और सॉरी ए, एन एंड दी, वो वाले आर्टिकल्स की बात मैं नहीं कर रहा. मैं जिस आर्टिकल्स की बात कर रहा हूँ वो है वो वाले आर्टिकल्स दैट आर यूजुअली ऑनलाइन. ऑनलाइन आपको मुख्तलिफ आर्टिकल्स मिलेंगे, वो आर्टिकल्स की मैं बात कर रहा हूँ. सो दोज आर गोइंग टू बी द आर्टिकल्स दैट वी आर गोइंग टू हैव. नाउ राइटिंग के अंदर अभी बहुत बड़ी जो ब्रॉड टर्म है हमारे पास है एसे राइटिंग. एसे राइटिंग के अंदर हमारे पास होगा फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइप ऑफ एसेज, डिस्क्रिप्टिव ऐसे, फॉर एग्जांपल आर्गुमेंटेटिव ऐसे, मुख्तलिफ ऐसे की टाइप्स होती हैं. तो उन टाइप्स से रिलेटेड हम लोग क्लास लेंगे और उन टाइप से रिलेटेड हम लोग ऐसे लिखेंगे और सीखेंगे कि कैसे लिखना है हम लोगों ने ऐसे. फिर हम लोगों ने स्टोरी राइटिंग करनी है, हाउ टू राइट अ स्टोरी, हाउ टू राइट एनी काइंड ऑफ स्टोरी, वट एवर यू वांट. पर्सनली मेरा काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है एंड आई एम गोइंग टू शेयर अ फ्यू प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर आप स्टोरीज अपलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आप स्टोरीज बता सकते हैं और जहाँ पर आप स्टोरीज रीड कर सकते हैं. एंड हाउ टू राइट स्टोरीज, बिकॉज स्टोरीज ऑल्सो हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ स्कोप इन द फ्यूचर एरा. फिर हमारे पास होगा क्रिएटिव राइटिंग. अब क्रिएटिव राइटिंग के अंदर हम लोग क्या करेंगे? मुख्तलिफ डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर हम लोग अपनी परसेप्शंस, पर्सोनास और अपनी आइडियाज़ और आइडियल्स को हम लोगों ने जो है लोगों तक पहुंचाना होगा और लोगों को समझाना होगा. एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव यू आर गोइंग टू बी डूइंग इन क्रिएटिव राइटिंग. और अब डायलॉग कॉन्वर्सेशन राइटिंग में क्या करेंगे? जो हम लोगों का 2 वे कॉन्वर्सेशन होगी कि फॉर एग्जाम्पल अली, तो अली के सामने आपने फिर लिखना है हे ब्रो व्हाट्स अप, व्हाट यू डूइंग. इस तरह आप जो है कॉन्वर्सेशन लिख रहे हैं, आप एक
डायलॉग लिख रहे हैं, फिर फॉर एग्जांपल हसनैन है, वो कहता है नथिंग एल्स ब्रो, आई एम जस्ट बिजी, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट, आई एम अ डायरेक्टर, आई एम एटसेट्रा एटसेट्रा. आप ये जब आप कर रहे हैं, सो दैट्स सिंपली नोन एज डायलॉग. So we are also going to be learning about dialogues and how to use them and how to write them, which is going to be simple. Now that is going to be our syllabus for us. Thank you. So simply we are going to have a lot of different topics that we are going to be talking about. Sorry for the wait, because हमारे पास यहाँ पर live है, तो हम we have to talk in between. हमारी team भी जो है, because this is our first time working together, so it's going to be a bit hard for the first time, but inshallah in the future I'm going to have proper classes that are online. I'm also going to have one-to-one on Zoom, etc., which is going to be good and which is not going to be mismanaged, or which is going to be successful with us. So I was planning to actually have 1 hour of discussion with you people, and as we are finally to an end, that was all about our syllabus. हम लोगों ने syllabus के अंदर जो मुख्तलिफ चीज़ें सीखी थी और जो मुख्तलिफ चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी, that's what I simply showed here. Now अब हमारे syllabus के अलावा हम लोगों ने बहुत सारी और भी चीज़ें करनी है. मैं बच्चों को ये चीज़ नहीं सिखाता ओनली कि हम लोगों ने कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन स्किल्स, या हम लोगों ने कैसे करना है राइटिंग, या कैसे करनी है स्पीकिंग. आई एम ओवरऑल वो लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं. बहुत से पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कैसे बनोगे तुम जैसे, लाइक मेरे जैसे. सो जो आप लोगों के आइडिया के अंदर मैं कोई प्रोडक्ट हूँ, वो प्रोडक्ट कैसे बनना है वो मैं सिखाऊंगा. दैट हाउ टू बिकम दैट परफेक्ट सन, और हाउ टू बिकम दैट परफेक्ट पर्सन दैट यू वांट टू बी. अब मैं कौन हूँ? सो I have a lot of different achievements ranging from मैंने communication skills के अंदर masters किया है. I mean not the degree वाला masters, but I've mastered communication skills. I'm an English language instructor, journalist, writer, reader, actor. I've also acted for a while, by the way, theater acting. I'm also a director. I'm also a computer expert. I'm also a radio broadcaster. मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें की है. And that's pretty much about me. In my hobbies I have drawing and other productive things. अब यहाँ पर I'm a world record holder. I've done multiple courses from abroad and I do a lot of different things. Now ये सारी चीज़ें जो हैं, that's what most people want. बच्चों के अंदर के एक secure future हो. Currently I have more than 2 to 3, around about 6-7 jobs. तो ये सारी jobs जब मेरे पास है, मुझे future में कभी भी इस चीज़ों की problem नहीं होगी. Even though I'm just 5 years old. 10 साल बहुत कम उम्र है, पर हर एक माँ बाप मुझसे पूछते हैं कैसे बनना है आपकी तरह. तो कैसे बनना है आपकी तरह, ये चीज़ मैं सिखाऊंगा आप लोगों को इन सिंपल लैंग्वेज इन माय कोर्स. हाउ टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, हाउ टू बिकम द बेस्ट एट व्हाट यू आर डूइंग. दैट्स व्हाट मैटर्स इन माय पर्सपेक्टिव. इट्स नॉट अबाउट बीइंग द बेस्ट. एक्चुअली हम लोग ये नहीं सिखा रहे यहाँ पर, या हम लोगों ने ये नहीं सीखना यहाँ पर दैट हाउ टू बिकम द बेस्ट विद अस. मुझे 1 मिनट दीजिए. It's not always going to be about how to become the best for us, क्योंकि देखिए बेस्ट नहीं बनना हम लोगों ने, परफेक्ट नहीं होना. Perfection is not achievable. Perfection is not achievable. Perfection is not achievable. हम लोग नहीं कर सकते. But perfection से ज़्यादा बेहतर क्या है? It is betterment. It is betterment. So in simple language हमारे पास perfection के लिए हम लोग काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम लोग बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं. How to become better. आप जो कल थे उससे बेहतर बनना, ये मैं आपको सिखाऊंगा. देखिए जब आप एक चीज़ कर रहे होते हैं तो it's not about the destination. ये नहीं कि आपने ये चीज़ कर रहे हैं तो कैसे वो चीज़ ख़त्म होगी. ख़त्म होना नहीं है वो चीज़, जब आप कर रहे हैं that is the best part. It's the journey that matters, not the destination.
मेरी जब भी मैं देखता हूँ आजकल तो मैं मिस करता हूँ वो जर्नी जो मेरी थी इस वक्त तक पहुँचने को, और अभी मेरी जर्नी रवाना है, पर जो स्टेट है मेरा आज कि मैं कुछ कहूँ कि मैं फाइनली कुछ मैंने कर दिखाया, मैं कुछ हूँ, मैंने कुछ डिफरेंस लाया है, बट दैट इज़ नॉट समथिंग दैट मैटर्स हियर एट ऑल. What matters here is that the journey, मैंने जर्नी की और मैंने जर्नी से कुछ सीखा, which is all that matters and which is all that will help in the future. To all the parents that are watching, I'm going to be teaching how to become great at something that you do. How to improve your passion, कैसे passion करना है, कैसे procrastination ख़त्म करनी है, कैसे बेहतरी करनी है, how to become the best of the best and how to be working with your all of your energy. आपको मैं एफर्ट्स डालना सिखाऊंगा, आपको मैं रिजिलियंस, पोर्ट्रेंस, डिफिशेंस, आपको मैं जो एक इंसुलेंट स्टेट है पाकिस्तान का उससे निकालने का मैं आपको तरीका सिखाऊंगा, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ. मैं क्या था, आई वॉज पैशनेट, आई वॉज एफर्टफुल, आई वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, आई वॉज वेरी स्मार्ट वर्किंग. मैंने सब कुछ ट्राई किया, शुरू में हार्ड वर्क, अभी स्मार्ट वर्क. तो ये सारी चीज़ें जो मैं अपनी इंटरव्यूज़ के अंदर कहता हूँ, यही सब कुछ मैं सिखाऊंगा अपने कोर्स के अंदर. एंड दैट सिंपली ऑल अबाउट दैट. यहाँ पर बहुत सारी बात इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि देखें ऑनलाइन के अंदर एक्चुअली इस वक्त मैं नहीं देख सकता कि आप लोग क्या सवाल कर रहे हैं या क्या बात कर सकते हैं, बट इन सिंपल लैंग्वेज जो भी आप लोग यहाँ पर whoever are watching, अगर हमारे पास फिजिकली स्टूडेंट्स होते हैं, आज अभी भी बहुत ज़्यादा बुरी बारिश चल रही है इस्लामाबाद के अंदर, इन ब्लू एरिया, आई एम करंटली इन ब्लू एरिया. सो देखिए यहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा बारिश है, तो अनफॉर्चुनेटली बहुत खफगान की बात है कि स्टूडेंट्स नहीं आए जिन लोगों ने रजिस्टर या जिन लोगों ने आना था आज. बट जो लोग नहीं आए, खैर है, कोई बात नहीं. इंशाल्लाह द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू पीपल आर हियर, मैंने सोचा था कि मैं ये लास्ट 10 to 20 मिनट सवाल का जवाब देने में गुजारूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली जब हमारे पास नहीं है सवालों के जवाब, वी विल हैव टू टेक दिस इवेंट टू एन एंड. नहीं. So in simple language, in the future I'm also planning to make a group of WhatsApp जिसके अंदर मैं हूँगा और मेरे मुख्तलिफ और स्टूडेंट्स होंगे जो कि मेरी क्लासेस लेते हैं, वो सारे बच्चे होंगे और भी बहुत सारे लोग होंगे that are going to be joining me in that video of mine. So I believe that is all for watching. एक दफ़ा फिर मैं लेजेंडरी जो हमारी आउट्रो है, जो कि आप लोग मुझे जानते हैं, एक मेरी इंट्रो है कि दिस इज़ मी योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर मोहम्मद हसनैन, और एक मेरी आउट्रो. दैट इज़ ऑल फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़. दैट इज़ माई आउट्रो एंड आई बिलीव दैट्स इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह.